सो प्रिपरेशन शुरू करने में सबसे पहला स्टेप है कि हम जो हमने कंटेनर्स यूज़ करने हैं इसको बेकिंग बैग्स इनको हम ग्रीस कर लें. सो द बेस्ट वे टू ग्रीस देम इज दैट्स हाउ आई डू. नॉट टू मच ऑफ बटर बट यस. And then I'm going to use parchment paper. So they're going to be sticky. So you grease the sides of these valves. So we grease them quickly. नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने ये खुलने वाले जिसमें ये नीचे वाला पार्ट अलग हो जाता है, अगर आपके पास ये वाले कंटेनर्स है सो उसमें हम साइड्स पे भी पार्चमेंट पेपर रखेंगे क्योंकि कई दफ़ा ये लीक हो जाता है. सो टू प्रिवेंट इट सबसे पहले हम साइड्स पे पार्चमेंट पेपर रखते हैं लाइक दिस. देन वी आर गोना यूज द सेंटर वन. सो इससे वी मेक श्योर कि ये लीक तो नहीं हो सकता. दैट्स हाउ वी आर गोना डू द सेकंड वन. एक और वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर आई एम गोना एक्सप्लेन हाउ टू put the parchment paper properly in these pots. Okay, so the baking trays are ready. Coming up to the second step. So frosting ready करने के लिए this time I'm going to use Cadbury. This is a big one that I'm going to use all of it. इसको आप छोटा छोटा कट कर लें. कट करने के बाद इसको माइक्रोवेव करेंगे. And meanwhile जब ये माइक्रोवेव हो रहा होगा साथ ही हम एक one cream which is about 270 ml. इसको हम विस्क करेंगे और इसकी फ्लफी पीक्स करेंगे. So I'm gonna choose this milk chocolate. You can use any of your choice. Galaxy gives a really good texture. So आप अपनी पसंद की चॉकलेट ऐड कर सकते हैं. I'm gonna cut this first और उसके बाद इसको मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी. ये मेल्ट होगी तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे. Okay, let me tell you the best way. फ्रॉस्टिंग के लिए जो हम रेडी करते हैं चॉकलेट और सारी चीज़ें उसमें हम पानी का पॉट रखेंगे. इसको गर्म होने देंगे. मैंने ऑलरेडी इसके अंदर गर्म पानी ही डाला है. इसको हम गर्म होने देंगे. देन वी आर गोना ऐड अ बॉल इन इट जिसके अंदर हम सब चॉकलेट रखेंगे और इसको लो फ्लेम पे करके लो टेम्परेचर पे करके चॉकलेट को मेल्ट होने देंगे. इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ माइक्रोवेव दिस इज द बेस्ट वे. जितनी देर में हमारी वो रेडी होगी क्रीम तब तक चॉकलेट भी यहाँ मेल्ट हो जाएगी. चॉप चॉकलेट इसके अंदर ऐड करते. पानी उतना ही डालें कि वो बाहर ना निकले इसके वेट की वजह से. और जब इसको अब हम होने देते हैं एंड लेट्स कम टू क्रीम पार्ट. सो इसको मैं अच्छे से बीट करूँगी. ये देखें चॉकलेट मेल्ट हो रही है और साथ साथ यहाँ पे क्रीम ऑलमोस्ट बीट हो गई. So while the chocolate melts, इसको थोड़ा वाटरी करेंगे. देन ऑन रूम टेम्परेचर इसको हम फिर इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ साथ इसको बिस्क करेंगे. सो दैट बी फ्रॉस्टिंग. एंड आई नो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी कोई क्वेश्चंस होंगे कि फ्रॉस्टिंग पहले क्यों बना रहे हैं इंस्टेड ऑफ बेकिंग द केक विच इज़ गोना टेक मोर टाइम. सो फ्रॉस्टिंग को मैं रेडी करके इसको मैं 3 to 4 hours रेफ्रिजरेट करूँगी एंड देन वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू बेक द केक्स. That's the reason. So let me see. I guess we're almost there. Just 1 or 2 chunks of chocolates are left, and then I'm gonna beat it up. और इसको हम रेफ्रिजरेट होने देंगे. और फिर मैं दिखाऊंगी कैसे हम इतना सॉफ्ट केक बनाते हैं. And basically the cake I'm baking, it's just because of my older one. She really wanted cake today. There's no special occasion, no birthdays, nothing like that. But it's all for her. She requested, so I have to make it. I hope moms can relate to me when the kids demand something. Chill. Okay, so ज़्यादा नहीं. इसके अंदर about more than half of chocolate हमने ऐड की है और इसको slow and steady हम मिक्स करेंगे. Look at the color. It's looking dense. अब इसके अंदर हम बाकी ऐड कर देंगे चॉकलेट. Give it a try. ये बहुत टेस्टी बनेगा. बहुत मॉइस्ट है. बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ. And everybody just loves it. So give it a try at home, especially for your kids. It's something they can never say no to. So let's quickly do this.
this. Okay. ये देखिए, इसको अभी मैंने स्टार्ट किया है बीट करना. इसको अच्छे से बीट करती हूँ. Alright, so here's the frosting. और I hope you can see. अब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे और रेफ्रिजरेट करने के लिए the best way ताकि ये थिक हो जाए. Alright, it's been half an hour. So अभी हम इसकी बना के चेक कर रहे हैं and it's coming clean. Means cake's done. Let's check the other one. This one's a bit wet, so let's just move them a bit around and let them be in there for next 5 minutes. दोबारा check करेंगे. So these are done. अब इनको निकाल के we will let them rest for 10-15 minutes and then we will take them out. Okay, so yeah, these are almost normal. इनको हम खोलेंगे and we're gonna take them out of the pans. See, these are not sticky at all. ये almost ठंडे हो चुके हैं, but frosting लगने से पहले इनको बिल्कुल ठंडा करना होता है. So you can still see the steam coming out of them. और अब इनको upside down, we will let them cool down. This will take probably 10 to 20 minutes. Okay, so these have cooled down. So इसके ऊपर जो थोड़ी सी hard part है, इसको मैं कट कर दूँगी. दोनों केक्स के ऊपर से इसको उतार लेंगे. This can be eaten. Okay, now it's time के sugar syrup. ये जो केक्स मॉइस्ट होते हैं, दिस इज़ द थिंग, इक्वल क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वार्म वाटर, और इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं. इट गिव्स इट अ गुड टेस्ट. सो इफ यू हैव एनी स्प्रे बॉटल यू कैन यूज इट. सो आई एम गोइंग टू यूज अ स्पून. इट विल गेट एब्सॉर्ब्ड. Okay, so we have got the frosting out. This is how it's gonna look. So frosting लगाने का purpose ये है क्योंकि अभी केक को हमने स्टार्ट करना है. So to make the cake stable up here, and the other one goes upside down. This is how it's gonna go. So the cake stays balanced from the top. अब इसकी frosting करते हैं. Okay, so केक को स्टैक करने के बाद हम इसको, जो हमारे पास frosting हमने रेडी की है, इसको मैं हल्का सा whisk करूँगी to get it soft, तो बहुत easily अप्लाई हो जाएगा केक पे. So let me whisk it properly. So we have Anapia here, who is super excited to decorate the cake. Done. So let's start. Take the spatula. Come on. Quick. मैं लगाती हूँ. क्या? मैं ये वाला लगा रही हूँ. Quick, this one. तो आप क्या करना? इस पे करना है. तो सारा. Do अब it. मेरा क्यों कर रही हूँ? Okay, you do it. मैं कहाँ हूँ? Do it. रुको. वहाँ से ही करो. It's मैं okay. आ जाऊँगी. Easy. Put some more. Come on. Come on, you need to be fast. It's okay. It's more than enough.
Easy, let me help. Okay, Nape, thank you so much for your help. You can leave now. So, one there we're done with. अब इसको हम अच्छा, इसको अच्छे से हमने फ्रॉस्टिंग करके we will have to refrigerate it for at least an hour.